Yes, so very good afternoon to all my dear students. Children, just have a look towards the screen. What is shown? See, during photosynthesis, plants emit light called fluorescence that humans can't see. See, children, as I told you yesterday, that every day I will tell you the facts about the science which are actually related to our everyday topics. So yesterday we talk about the fact of Rafflesia flower. Yes. So Rafflesia flower, as I told you, it is parasitic. So our today's topic is photosynthesis. So it's a fact about the photosynthesis. Basically, see children, all of you knows that what exactly happens in the photosynthesis, right? That plant utilizes water and carbon dioxide and they produces their own food. This much everybody knows. But what apart from that, which many of the student doesn't know that what exactly happens. So children, during the photosynthesis, we know that the plant absorbs sunlight. Okay, it happens in presence of sunlight. So basically what we know that plant absorbs the light. Plant जो होते हैं वो sunlight को क्या करते हैं बेटा? Absorb कर लेते हैं. ठीक है? And then the photosynthesis happens. But student, apart from this, as the plant utilizes the sunlight, during the photosynthetic process, they also emit some radiations. Which are called fluorescences. Okay, and this fluorescence, this emission of a kind of energy, which is not visible to us. ये ऐसी एनर्जी है जो हम नहीं देख सकते हैं. ये लाइट, ये ब्राइटनेस, ये फ्लोरोसेंस हम नहीं देख सकते हैं. तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया? कैसे पता चला फिर ऐसा हो रहा है? Just because we have this image on the Google, that's why? No. ये कैसे पता चला है? This was found by NASA. आपको नासा पता होगा. नासा इंस्टीट्यूट ने ये फाइंड आउट किया है. उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक सैटेलाइट जो छोड़ा है, जो हमारे अर्थ के अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है. उससे ये पता चला है कि जहां जहां पर हमारे अर्थ पे प्लांट्स हैं, मतलब जहां पे फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीनरी है, वो वाले पार्ट्स से ऐसा एक इमिशन आते हुए उस सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया है. ये इमिशन ऐसा है जो लैंड वाले पार्ट पर नहीं दिखाई देता, बट जहां पर ग्रीनरी है उसी पार्ट से इमिशन उस सैटेलाइट से डिटेक्ट किया गया है. Then they carried out certain experiments and then they came to the conclusion that yes, it is true that plant emits certain radiations during photosynthesis, which is called fluorescence, which we cannot see. Okay, which we cannot see. So I hope you are very much clear about this fact. Let's go to our topic. See children, when I ask you anything like, did you understood? Is this concept clear? See children, you are expected to respond me immediately. Okay, then only I will come to know whether this concept is clear to you or not. So just tell me, is the fact about the photosynthesis, which is actually not known to you, which was not known to you, but now everybody knows about this. Okay, so is that clear about the fluorescence? Okay, thank you so much. So let's talk about the photosynthesis in detail. Okay, so our today's topic is autotrophic mode of nutrition in detail, where we are going to learn about the photosynthesis concept, the balanced chemical equation of photosynthesis, what are the raw materials required for photosynthesis, where it happens in the plant, what are the steps involved,
and 3 photosynthetic experiments. So this is very easier topic children, and which is again very important for 5 marks. जब भी photosynthesis पे कोई question आता है ना बेटा, directly 5 marks के लिए आता है. So यहाँ पे किस टाइप के questions आ सकते हैं? The very first, definition of photosynthesis. So what is definition of photosynthesis? It is a process performed by green plant in which the plant synthesizes their own food. ये हो गया एकदम simple language. Complex language में plant utilizes solar radiation in presence of chlorophyll to produce chemical energy in the form of glucose. ये थोड़ा सा difficult हो जाता है ना? But it is actually the way that 10th standard students are expected to write the definition of photosynthesis. Okay, student. So please remember what the definition is according to your NCERT book. It is the process happens in presence of sunlight with the help of chlorophyll, where the plant converts solar energy into chemical energy. Okay, so exactly what happens in this process? Children, the photosynthesis basically completes in 2 different steps. है ना? कितने steps? 2 different steps. 2 step में complete होती है. The first is called light reaction. Light reaction. Children, can anyone guess why this reaction is called light reaction? Why this name is given light reaction? Yes, I'm waiting for your answer. In this part, absorb sunlight. Yes, of course, very good. Very good. Because light is necessary. Yes, of course. Yes, very good, very good. Very good, Aditi, Bhagyashri, Sukrita, Arnav. Arnav Khadke, yes, very good. Yes, Sukrita, of course. See, what exactly happens in this process? In this process, the light is utilized. Or in other words, we can say, the light action happens only in presence of light. What the source is, that doesn't matter. Whatever the source, natural source हो light का या artificial source हो. For example, आप एक काम कर सकते हो in order to check whether I'm talking about the fact or not. You can do one thing. You have potted plant at your home. Okay, everyone is having one or other potted plant at their home. What do you have to just do? Basically, we are keeping the plants in a sunlight, right? हम लाइट में रखते हैं, बाहर के लाइट में रखते हैं, sunlight में. You do one thing. Just take out that plant from the sunlight and put it into the one room where you have to provide 16 by 8 hours photo period. मतलब क्या? सोलर प्लांट को लाइट में रखना है. कौन सी लाइट? आर्टिफिशियल लाइट जो हम यूज करते हैं ना, घर में हमारे ट्यूब्स होते हैं, वो ट्यूब आप यूज कर सकते हो. 16 आवर आपको उसको लाइट प्रोवाइड करना है. 8 आवर उसको आपको just do. You have to keep that potted plant in the artificial light for 16 hours and in a dark for 8 hours. Means you have to just switch off the light for 8 hours. Then children, you will see that the plant will keep on growing naturally. Okay, there will be no any difference in the growth.
If you keep that plant in the dark, even that will in the particular room where you are providing artificial light, the plant will grow as it is. Okay, there will be no any difference in the growth of the plant. So whatever the source of light, okay, artificial or sunlight, the photosynthesis happens. Okay, so the first reaction is called light reaction because the particular reaction happens only in presence of light. Whatever the source is, but it happens only in presence of light. So exactly what happens in this process? Light reaction हम बोलते हैं, मतलब इसमें exactly क्या होता है? The chlorophyll present in the plant, absorbs the light energy. वो light energy को absorb कर लेती है. And then that stored energy is utilized to perform the further reaction in the plant. फिर start होती है आपकी dark reaction. ठीक है, फिर start होती है second reaction, that is dark reaction. अब डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा दो रॉ मटेरियल है, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड. तो वाटर के साथ क्या होता है? दिस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू, इट गेट्स स्प्लिट इनटू किसमें? H2 plus O2. The water molecule breaks into hydrogen and oxygen. And where it happens? It happens in the cell itself. Plant cell जो होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, in that it happens. Then this hydrogen is added over the carbon dioxide to produce glucose. अब देखो ये ऐसे इस डायग्राम के साथ इसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. So in your NCERT, the 3 steps are given in very appropriate manner. From there, you can learn it. Okay, so at the very first, what you will write, if you have NCERT with you, you can take it and you can just open the topic autotrophic mode of nutrition, and on second page, just after the balanced chemical equation, these 3 steps are given. Steps of photosynthesis. So the very first is, देखो क्या क्या हुआ. सबसे पहले हुआ absorption of light by chlorophyll. Second point, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. And third one, reduction of carbon dioxide. जो carbon dioxide है बेटा, इसके ऊपर hydrogen की addition हुई. And addition of hydrogen is called reduction. So together, the carbon dioxide and hydrogen makes the molecule called glucose. Its formula C6H12O6. ठीक है, C6H12O6. So this is produced in the plant after the photosynthesis. बाद में क्या होता है? Such many glucose molecule, you know, they joins together. Such many glucose molecule binds together in a chain like this. And that forms the molecule called starch. इससे बन जाता है starch. And that starch remains in the plant body as a stored form of energy. ये plant में as a stored form of energy होती है. ठीक है? So now I'm sharing the NCERT book with you. Pay your attention here on the screen, children. Is the screen visible, students? Okay, take out the same page from your book. As I told you yesterday, you have to be ready with highlighter today. Okay, because I'm going to show you some important concepts from your NCERT book, which you have to strictly read from NCERT only. जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में.
तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस पे कि डिफाइन करो. ओके, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो डिफाइन डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? You note down in your notebook right now. Photosynthesis is the process performed by green plants. Is the process performed by green plants to produce or to synthesize their own food. In this process, keep on writing. In this process, solar energy is utilized. Solar energy is utilized to convert. Note down. Solar energy is utilized to convert inorganic molecules. To convert inorganic molecules. Inorganic molecules into organic molecules. Inorganic molecules into anorganic molecules. अब देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ. This is exactly the balanced chemical equation of photosynthesis. Make it important, very very important for 1 mark. ये 1 mark के लिए पूछा जाता है. What is this? 6 CO2, 6 molecules of carbon dioxide are combined with 6 molecule of water. See here 12 H2Os are written, but what I'm telling you that only 6 molecules of H2O. Now why I have changed this number? Because if you see, out of this 12, only 6 reacts with the carbon dioxide, while 6 remains as it is. देखो 6 ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं हुए हैं. आउट ऑफ 12 ओनली 6 रिएक्ट हुए हैं और 6 जो है वो एज इट इज है बाय प्रोडक्ट में. वैसे के वैसे रह गए, रिएक्ट नहीं हुए. ओके, इट मींस 6 carbon dioxide reacts with 6 water molecule in presence of chlorophyll and sunlight. तो क्या बनता है? Then it forms 1 molecule of glucose. ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है along with formation of 6 oxygen molecule. Okay, so when 6 carbon dioxide reacts with 6 water molecule, 1 molecule of glucose is produced along with 6 molecules of oxygen, while 6 water molecule remains as it is. तो बेटर है कि यहाँ पर 12 की जगह पे हम 6 लिख सकते हैं. And don't write this 6H2O here. This will be again okay. If you look at NCERT books of old editions, in old NCERT book, the reaction is given in this way. 6 CO2 plus 6 H2O gives out 1 glucose plus 6 O2. तो कुछ बुक में ये वाली रिएक्शन है, कुछ बुक्स में 12 H2O वाला रिएक्शन है. दोनों का मतलब सेम है. 6 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए या फिर 12 में से 6 यूटिलाइज हुए और 6 एज इट इज बचे. बोथ रिएक्शन हैज सेम मीनिंग. द नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. What are raw material required for photosynthesis? So these two are raw materials, children. So in raw material you will write carbon dioxide and water are the raw materials. So after the definition, note down raw materials for photosynthesis. Come on, note down fast. Put a dash. Raw materials for photosynthesis. Put a dash. Note down in words carbon dioxide and
water are the raw materials. Once you finish, drop S in the chat box. Good. Anyway, you're getting this video afterwards. Okay, so if it is remaining, you can complete it later on. Okay, you will get the video. Yes. Then note down conditions required for photosynthesis, students. Conditions. In what conditions the photosynthesis happen? ऐसी कौन सी condition है जिसमें photosynthesis होता है? अगर वो condition नहीं रहेगी तो photosynthesis नहीं होगा. Who will tell me what is that condition? Yes, any guesses? Very good, Chanchal. Very good. It's the sunlight. Yes, very good, Bhagyashri. Yes, yes, all of you. Very good, very good. Yes, yes. Note down sunlight and chlorophyll. Yes, Aditi. Yes, yes. All. Those who are dropping message in the chat box. Your answer is correct. Okay. Sunlight. Yes, Tamanna. Of course. Sunlight and chlorophyll. Yes, of course. Sunlight and chlorophyll are conditions required for photosynthesis. Yes, very good, Prajakta. Okay, so I hope you are very much clear with the three topics of photosynthesis, that is definition, raw material, and condition required. Let's have a look towards the steps involved. Wait a moment. Okay, look at the first step, children. What is written? Absorption of light energy by chlorophyll. As I told you, the first step is called light reaction. So this is only that first one. The light reaction. कौन सी है? This first step. Absorption of light energy by chlorophyll. देखो यहाँ पे sunlight नहीं लिखा हुआ है. Does it mean it happens in artificial light also? So yes, it happens in other sources of light also. The next one, conversion of light energy to chemical energy. सबसे पहले क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है, इसको एक केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इन द क्लोरोप्लास्ट इटसेल्फ, एंड देन दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू स्प्लिट. स्प्लिट मतलब ब्रेक करना, splitting water molecule into hydrogen and oxygen. Okay, so with the help of that energy, the water breaks into hydrogen and oxygen. फिर क्या होता है? फिर यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ऐड होता है, and that process is called reduction to gives out glucose. See the third one, reduction of carbon dioxide to carbohydrate, और carbohydrate मतलब ही ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट मतलब ही ग्लूकोज. अब कार्बोहाइड्रेट ये एक ही टाइप नहीं है ग्लूकोज का, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का एक ही टाइप ग्लूकोज नहीं है. स्टार्च इज अगेन कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज इज अगेन कार्बोहाइड्रेट. जो शुगर हम खाते हैं एवरी डे, दैट इज सुक्रोज, विच इज अगेन अ सोर्स ऑफ a type of carbohydrate. Okay, so carbohydrate बहुत सारे हो सकते हैं, but here in this sentence the meaning of carbohydrate means the glucose which later on get converts into starch. Okay, so ये तीन स्टेप आपको लिखने होते हैं. जब आपको क्वेश्चन आता है, write the steps occurs in the process of photosynthesis. जो डायरेक्टली 5 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आता है अलग से, बट अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो उसके साथ एक फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट एडेड होता है. तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो एक्सपेरिमेंट क्या है. दैट इज अगेन वेरी इजी एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रन. बिफोर दिस यू हैव टू हाईलाइट दिस 3 पॉइंट्स इन योर टेक्स्ट बुक. हाईलाइट पॉइंट 1, 2 and 3.
ओके 3 मार्क्स के लिए इसको हाईलाइट करो, मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड में इसको IMP कर लो. ओके एंड गो टू द प्रीवियस पेज. ओके बेटा, सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ. वेट अ मोमेंट. सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, देखो ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है सेल के अंदर. उसके अंदर ना ऐसे गोल 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 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे गोल 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थाइलेकॉइड्स. ओके, दे आर कॉल्ड थाइलेकॉइड्स. ये आपने 9th में ही पढ़ा है ऑलरेडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. दे आर कॉल्ड थाइलेकॉइड्स. ये थाइलेकॉइड्स के अंदर होती है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ओके, फिर ये ग्रीन पिगमेंट क्या करती है, इट अब्सॉर्ब्स solar radiations, it absorbs radiations from light, and then this solar energy is get convert into chemical energy. सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. one form of energy get convert into another form of energy, and then that energy is utilized to break, to split water molecule. देखो रॉ मटेरियल में क्या क्या है. Let's have a look towards the equation once again. रॉ मटेरियल में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है. तो ये जो वाटर प्लांट ने अब्सॉर्ब किया है, इसका क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ब्रेक हो जाता है और फिर यही हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड पे ऐड होता है बेटा, तो जिससे बन जाता है ग्लूकोज. और देखो यही ऑक्सीजन एज अ एंड प्रोडक्ट में है, वही ऑक्सीजन उसका एक बाई प्रोडक्ट में हमको मिलता है ना. सो दिस इज द सेकेंड वन, that is splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and the same hydrogen is added to the carbon dioxide, and that process is called reduction. So reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate, that is glucose. Is it clear now? किसने मैसेज ड्रॉप किया था बेटा? हाँ ठीक है. Go to the previous page, children. If you have a highlighter with you, highlight the last word. Highlight the last word of the paragraph of that page. What is that word? Tell me. Yes, yes, students. What is that word? Yes, very good. Glycogen. Very good. So let's have a look towards the particular sentence. Glycogen, is the stored form of energy in animals. ठीक है, हम जो है हम हमारा फूड नहीं बनाते हैं, but whatever the food we take from outside, okay, that stores in the form of glycogen in our body. Okay, so you have to underline that statement. क्योंकि बेटा इसके ऊपर है ना 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. दैट इज राइट the stored form of energy in animal. You have to write the glycogen answer for that, and just read the previous paragraph where you will get one word starch. Okay, you have to underline that also. Wait, I'm showing you where is that exactly. If you got it, you just underline that word. Starch. Yes, where it is, where it is, where it is. Starch. Tell me where it is. Just find out. Okay. So what is written? The stored form of energy in plants is starch. Okay, so ये दो words पे question आता है. This one and this one. Don't get confused. The stored form of energy in the plant is starch and in the animal is glycogen. Okay, इसके ऊपर 1 मार्क के questions आ सकते हैं.
Now, students, we have the photosynthetic experiments. Okay? अब ये photosynthetic experiments क्या है? अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये क्या डायग्राम है मैम? सो बेटा ये जो डायग्राम है ये पता है क्या है? इट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, है ना? देखो हमने लीफ तो देखा हुआ है. सो ये जो लीफ होता है, इस लीफ को अगर आप ऐसे कट करोगे और इसका ये वाला पोर्शन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, साइड वाला, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? मतलब ये लीफ है, देखो इसको कट किया हुआ है, और इसका ये वाला पोर्शन अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या दिखेगा? सो अपर पार्ट ऑफ द लीफ is called upper epidermis, lower part of the leaf is called lower epidermis, और इसी lower epidermis में होते हैं tiny holes, okay, and these tiny holes are called stomata. तो ये देखो ये tiny hole है जो मैं भी ब्लू कलर से हाईलाइट करूंगी, okay? I hope this is clear to you. See that one, the hole of the lower epidermis, that hole is called stomata, which is surrounded by guard cells. देखो मैं रेड कलर से इंडिकेट करूंगी guard cells. These are the guard cells, right? ये guard cells shrink होते हैं, swell होते हैं, shrink होते हैं, swell होते हैं, और ये stomatal pore open close ऐसे होते रहता है. Stomata का जो हमारा डिटेल फंक्शनिंग है that we are going to learn in coming topic, not right now. फिर ये बीच में क्या है? What is this? These are the mesophilic cells. वर्ड आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, बट दे आर कॉल्ड मेसोफिलिक सेल, कंटेन क्लोरोप्लास्ट. ये सारे जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं सारे ऐसे लाइट ग्रीन शेड के, है ना? दे ऑल आर क्लोरोप्लास्ट. तो ये सारे सेल्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस. इन सब के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस. ओके, तो मैं अभी आपको डायग्राम बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे कौन से सेल में फोटोसिंथेसिस फिर नहीं होती है. देखो इस डायग्राम को और मुझे बताओ कि कौन से सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती होगी, किसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, चेक करो फटाफट. यस यस, वेरी गुड. इपिडर्मिस, ओके.